मैं जब मैं सीन देखता हूँ मैं तब रोता हूँ। खून चला वाला गाने में वो है वो मुझे पूरा घूमता है कैमरा, ठीक है, वो कांच चढ़ता है, वो देखता है अपने सराउंडिंग में, देखता है, वो देखता है ये सब हो रहा है, वो देखता है कुनाल का मुर्गा कैरेक्टर मार खा रहा है, वो जाता है, वो मारता है पुलिस वाले को, वो उठाता है और वो उसको लेके जाता है। और मैं पहले आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, मैं जब दिखाता तब मैं रोऊंगा, ठीक है। What has been your relationship with the film over the years? Did you get a chance to revisit the film? Did you get a chance to think about it again? Or like what are the things that you remember today about the film? The film released almost so many years ago, I think 16 years ago. What is it that still stays with you? मैं तो मतलब एक वन लाइनर बना लिया था इसके लिए। मैं बोलता है यार, रंग दे बसंती इज नॉट अ मूवी यार, इट्स अ रिवॉल्यूशन। वो एसएमएस और इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करना, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना, मतलब वो रंग दे बसंती के बाद से इतना फ्रीक्वेंटली होने लगा था। एंड आई वॉज लिविंग अराउंड दिल्ली उस समय एक्चुअली मैं मूवी तो मैंने कोटा में देखा था, बट जेई के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भी कभी कभी जाता था, फिटजी वगैरह के कुछ ऐसे ऑफलाइन एग्जाम्स देने जाता था। एंड सडनली दिल्ली बिकेम माई वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। एंड वो सब वो कि इंडिया गेट के पास से सैल्यूट मार के निकलते, बट वो मूवी में दिखाया। बट रियल लाइफ में जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गया तो देखा कि यार इतने पास तो इंडिया गेट के गाड़ी भी नहीं ले जा सकते हैं, मतलब दे स्टॉप यू लॉन्ग बैक। सो दीज ऑल जो आइकॉनिक शॉट्स थे ना, ये बहुत ही मतलब मे बी इट वाज मतलब आई वाज इन द राइट स्टेज ऑफ माय लाइफ। जो बोलते हैं ना कि रिवॉल्यूशन एंड ऑल, एक स्टूडेंट लाइफ और टीनेज में एक फेज आता है तुम्हारा, when it's not just adolescence and you're not just rebelling with your parents and all those बंदिश जो हम लोग को एक रूटीन में बांध के रखते, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू स्टार्ट नोटिसिंग। देयर आर मेनी थिंग्स जो एक होता है ना कि हम एक एपॉलिटिकल ब्लैंकेट के अंदर बहुत दिन तक बचे रहते हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस कि नहीं यार बॉस ये गलत है तो गलत है। तो वो वाला जो सेंस आता है ना हर इंसान के लाइफ में, पता नहीं सूनर और लेटर हर किसी को आता है, वो बहुत ही एकदम करेक्ट पॉइंट पे हिट किया था। बिकॉज 2006 आई वाज इन क्लास 11th और 12th अराउंड, वो पता नहीं वो एज के साथ भी और वो जो हो रहा था मूवी में, एंड उस समय तो बहुत कुछ भी झेल रहे थे यार, मतलब बट ऐसा कुछ एक्शन लेने लायक नहीं लगता था। एंड आई रिमेम्बर उस समय एक और इंसिडेंट हुआ था 2006 के अराउंड, दिस रिजर्वेशन एंड ऑल, ओबीसी पे भी बहुत बड़ा बवाल हो रहा था। एंड तो वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, एम्स के स्टूडेंट लोग भी ओबीसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड वो वाटर कैनन वगैरह उस समय हम लोग देखते थे। तो वो पता नहीं मतलब मूवी और आउटसाइड द मूवी जो रियल लाइफ हम लोग जी रहे थे, वो बहुत ही रिलेटेबल हो गया था। So I think this film and the iconic shots it has, it's one of those things that defines Bollywood. Like it has that aesthetic that you can show to a random person who doesn't know about Bollywood and कह कि यार अगर मुझे 10 शॉट दिखाने हो ना कि ये बॉलीवुड है, तो उनमें से इसके शॉट्स होंगे, that then the flying वाला it will be there because it defines the aesthetic of Bollywood, the right use of sentimentality, the right use of drama, right as in the appropriate use of drama. I think from filmmaking standpoint, it just hit the right note that connect with youth, India, and the entire, like it connects the youth of today with the youth of the past. To be honest, मेरे लिए journey started way before with this मस्ती की पाठशाला song. वो स्कूल में बजता था, तो वो song से journey start हो गई थी। पर when you listen to this song, you never imagine कि मूवी ऐसी होगी। Like if you haven't watched like read anything about the movie, you don't know कैसा मूवी पूरा रिवोल्यूशनरी के ऊपर है। मतलब सॉन्ग तो पूरा मस्ती वाला सॉन्ग है ना, बट देन व्हेन आई वॉच्ड द मूवी आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। Fortunately watched Rang De Basanti. One was pre the college political awakening and post it as well. So pre was just feeling this sense of responsibility कि okay, when you're going to grow up you will have to change something, because as R Madhavan said, it's very easy to sit out on the outside and make comments. But I also like what Shubham said, what Shruti said and Harsh as well, like वो गानों के बारे में, it was so emotional. And I remember my dad telling me कि the reason that a lot of like the film left everyone unsettled because technically they didn't win as such, you know,
because they did lose their lives. So everyone was left with that anger because they were with the characters. So कि यार ये नहीं सही हुआ and this has to change. So leaving the audience with that left them with this fire to pursue this outside of the film. And 2-3 things that I remember noticing was the way that it was like brought out कि ऐसे ही होती है political awakening, you know, जब तक आपके कोई करीबी person के ऊपर नहीं आता है या you don't somehow first hand feel a sense of injustice in whatever way, it does not get you completely involved. So whether that was feeling कि यार this gender issue बहुत है at the age of 13 for me when I first time got Eve teased, to later on feeling कि when I had a Kashmiri friend and I could see her sobbing in front of the TV when that entire article ka removal was being announced and all of that, and her not being able to connect with her family for 2 months because of the curfew. So when you see all of those things change for you also. Political conflict in the film is easily replaceable with any other political conflict as well. So that way it's a very universal film, and it stays relevant because of that. It's the youth ka awakening which is a central aspect of it. The conflict of flights में issues रहते थे, incompetence का वो बात हुआ पूरा and all of that. That can be changed with any other problem as well. For example, a different film जिसमें भावेश जोशी सुपर हीरो, उसमें they're talking about the water issue in the city. अब वो water issue की जगह पे कुछ भी और हो सकता था. For that Bhavesh Joshi character to get that sense of political awakening and that feeling of कि I have to take charge now, उसके लिए वो कुछ और भी हो सकता था. So I think what matters is for us to not stick on the conflict per se. I like what the movie represents personally. Like change is an attitude shift away. Like they say, right? How art inspires society, and sometimes society inspires art. Here it's funny. I think I just recently saw an article where India is now selling Tejas fighter jets all over the world. I think I realized somewhere we all like need some nudges, like, you know, to get our act together, and it not always has to be something, you know, bad circumstances, or it doesn't have to be necessarily something negative. It could even be positive, like seeing leaders like take initiatives and that inspiring you, like in the movie how Amir Khan and his group like took initiative and then stormed the AIR and like they did stuff, and which later we've seen several montages of like, you know, youth across India talking about it and then wanting to do something again. Like similarly, like for me, you know, when I would see content of India doing well, let's say for example, let's say India winning in chess tournaments, that seeing that made me like gave me goosebumps. Like you know, if many of you guys have had that like a cricket World Cup moment where, you know, like you see India's flag and it gives you like, it makes you feel more patriotic and nationalistic and like, and like makes you feel proud of the country, and then like see, okay, maybe I can do something for the nation and like have a part there. Like most often we just dismissive and like, you know, say negative things about our country. We don't actually do stuff. Our beliefs sort of depend on what we see happen around us. And like when you first-hand experience good things, or like leaders do something, like, you know, there was this social experiment where they like pushed one guy just to dance awkwardly in a group, like in a party and outing, and suddenly like everyone joined him. Like there was no one dancing, everyone was just standing quietly, and then suddenly he just started dancing, and somehow like 2 people more joined in, and then suddenly 3, and then everyone else also joined in. Like a trickle effect happened, and I think that can happen like on a national level as well. I Am 20 is a documentary, and it was made in 1967. It's a very old, मतलब उस time के ज़माने की documentary है. And उसमें भी जो एक बंदा था, he was our age, like R as in my Saharsh हमारे age group के उसमें था. And he said that firstly he said it's become fashionable to diss your country, like his own मतलब लिंगो में उसने बोला था, but like it's become fashionable to diss your country, and it's a competition between people about who can diss the country more. I'm using the word diss, but उसने कुछ और बोला था. And दूसरा चीज उसने बोला था much later in the documentary, that if gotten a chance to leave the country for the reasons of, you know, better life,
I would rather still stay in India because this is a huge social experiment. India as an idea is a huge social experiment, and I'd rather want to be a part of it. And I think that watching that gave me a lot of goosebumps. Like my goodness, like the optimism this guy has at the age of 20, that I would like to be a part of this experiment because I have hope. 1967 में बोला था उसने ये चीज. Are there any aspects of the film according to you which haven't aged well? Like if you had to choose one aspect about the film that hasn't aged well. Aged well नहीं, but मुझे लगता था कि उस समय थोड़ा ahead of times था. I mean the way conservative wing was stopping all this कि ये westernization हमको नहीं चाहिए, ढिक चिक बंद जो आता है ना पांडे, मुझे लगता है उस समय उतना नहीं होता था, या हो रहा होगा, बट लेटर डाउन उस मूवी के बाद मुझे लगता है कंजर्वेटिव विंग्स वेयर जो फ्रिंज एलिमेंट्स और इस तरह के डिस्टर्बेंसेस ना हम ज्यादा सुनने लगे. फिर उस समय इतना नहीं सुनने को मिलता था, बट वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट ना कि ऐसे ही कोई भी कंजर्वेटिव विंग गया और किसी भी पार्टी को रुकवा दिया, ये पता नहीं, इट वाज नॉट कॉमन इन 2004-06 वाला टाइम. Why is it important for a person of our age, like our age as in our era, to know about the past, to know about the people of the past? Do we owe anything to them? Why is it important for us to know about the lives of our freedom fighters or anybody else who lived at that age? मतलब अगर आप जानते हो तो आपको जान के क्या मिलता है? What perspective does it add, if anything? कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या हम उनके बारे में बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? Definitely बात करनी चाहिए. I think something that also was talked about in recent times is like, Indians have this gulami mindset now. There's something that's not gone away since colonial times. Like we think we are not good enough, like, but we are. Like we don't realize that. Not to sound like a WhatsApp uncle, but like India does have like a crazy rich history, like which we don't appreciate enough. Like I sometimes feel like we love less like India less than like people outside of India. So I think there's definitely a lot of value in going back to the past and revisiting it, and like seeing how grand we once were, and then like put an effort into getting there again. The fact you said about India feeling this sense of वो गुलामी mindset या जो भी बोल रहे हो उसके बारे में, I think whenever I read a little bit more and more about the 1983 World Cup, for me that is a defining moment, not just because I am a cricket fanatic that way, but also because so many people have sort of defined that was the moment India realized that, you know what, we have arrived in some sense. I'm glad that we're talking about India in a very optimistic way today, honestly. I think that moment in history didn't just tell people that, India is a good cricket playing nation, but it said a lot more within them, within us. So I think such moments in history really help you in actionable ways, tell you that, you know what, maybe you have it in you. I just also add one thought that I had, which was just to do with the fact that, like as Harsh mentioned, कि हम लोग को like we owe it to them because हमारे लिए शायद थोड़ा आसान है आजादी का understanding. But Radhika, do you think that our gratefulness or our gratitude rather for those people for whatever they did, should it come with a sense of guilt कि यार ये लोग ने किया था तो maybe, we should be a little more serious about our lives, or something like that? Personally, like as an immediate response, nahi, I don't. I feel the same way when we talk about parents sacrificing a lot for their kids. You do it for your own reasons. You do it for selfish reasons. Them fighting for the country was also partly a selfish reason. Ki bhai, I want to envision a free India. So in that sense, owing or guilt doesn't make sense to my head. Your earlier question, which is why it was important, there were a couple of things. One was something called, like we all know about contextualization, right? So like we do it in our classrooms also, like the students that we teach, we go to their communities, we visit their homes to understand where they are coming from, to see that their father is working here, their father is doing that, because without that बहुत ही superficial relationship रहता है आपका students के साथ, and that is very similar to the country also. And that comes from a space where I still think कि बहुत सारा I have not read about it, and that is where sometimes you feel a sense of कि करना चाहिए ये, a sense of obligation कि you need to do this, because without it your understanding of the country and your relationship with the country is a little
like I say, superficial, ki matlab you haven't really understood how it came. So for contextualization, I think it's important. And also, as Harshman mentioned, it gives a lot of hope, to abhi when I like college may had political awakening, to seeing a rise of say communal violence in a little bit way was shocking. But when you read about it, ki, acha, we've gone through worse and we've gotten through it, or whether when you read about the emergency period and we're like, we've gotten through that. So all of that gives you a sense of hope ki yes, this country is going through an identity crisis of sort, and it's great that that is happening. And we will get there eventually, because without this ye parso phutta, this whole bigotry or whatever. And also on Independence Day in my school, the HM, I mean the principal basically had said this one thing ki, you know, during the independence, like we all as individuals are finding our purpose, right, in life. Constantly, everyone is trying to find. But at that point of time, every person had the same purpose, which was getting a free nation. And that was so beautiful that so many people came together and had one purpose. So visiting that is very, I think, enlightening. What a time that everyone's purpose was the same, to get the country free. And I think just to revisit that in that ode makes sense to understand about the struggles of the country. Thank you for sharing that. I think one thing I personally believe in is that India as an idea was very, matlab, it's confusing. The fact that Jawaharlal Nehru की किताब का नाम Discovery of India, इसीलिए इसी हिंदुस्तान की खोज, मतलब सुन के ही समझ में आता है कि यार ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप कैसे कहीं एक तरीके से कॉन्ग्लोमरेट बना रहे हो ऐसा कि चल जाए ये, let's see how it goes. And I think the fact that even after 75 years we are somehow managing to stay together or stick together is something to appreciate. 75 years तक इतना बड़ा country, मतलब bro, मतलब it has not happened in other places. So it's special that way. Not denying the fact that there are enough problems to deal with, but the fact that it has not broken up, like Czechoslovakia, for example, or other places might be as well. The fact that it has not happened still shows the fact that there is hope. I think the identity crisis part that Radhika mentioned is a constant with a country like India. It always goes through it. I think that's the most interesting part कि ये हमेशा इसमें crisis रहा है identity का, आगे भी रहेगा. But इस पे बात होती रहती है. Somebody or other will always tries to keep on bringing that up. The fact you mentioned about the common cause everybody had, I think the only one specific common cause I personally feel everybody had was the fact that पहले इनको निकालो, इनको तो पहले निकालो फिर हम हमारा देख. I think उतना लेवल पे तो सब agree कर रहे थे. बाकी तरीका और चीजें, there are because so many things. It's मतलब freedom होता क्या है? Like it's आप freedom बोल रहे हो, लेकिन patriarchy is still at its peak. आप बोल रहे हो, but there is, for example, yesterday was Delhi crime, तो उसमें बताया था कि there are certain denotified tribes, मतलब there are certain tribes जिनको आप born criminals बोलते हो, जो 1951 के पहले वो लोग denotified हुए ही नहीं थे, मतलब they were still called born criminals, like they were called criminals, they were kept in jails in 1951, तो 4 साल तो आज़ादी मिली ही नहीं, तो उनके लिए 71 years ही हुआ. But technically 71 भी कैसे हुआ, because उसके बाद भी वो काम नहीं मिल रहा है. But still the fact that I think on a larger scale, on a macro point of view, the fact that we are still together somehow is something to appreciate. Very much agree to the fact that हमें history के बारे में पता होना चाहिए, historical personalities के बारे में पता होना चाहिए. But इसके reasons बहुत various हैं. Not only because of the fact that they have fought for our freedom. Yes, every country remembers their founding fathers and mothers. जो भी मैं बहुत पर्सपेक्टिव वाला इंसान हूं, तो मैं पर्सपेक्टिव में मूड करता हूं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, I do not compare any kind of event from a different era to this era. स्कूल में भी हमने थोड़े से ना ताने ऐसे सुने, या कॉलेज के टाइम में जब 22-23 साल की उम्र हो गई थी ना, तो ऐसे लोग बोल देते थे ना मजाक में, अरे तुम्हारे उम्र में तो भगत सिंह लटक गए थे, तुम क्या किए. ठीक है, तो these things are very wrong comparison. Even though कोई उस समय के लीडर को आज के एरा से जब कंपेयर करता है कि अरे नेहरू ने तो ये कर दिया था, वो कर दिया. So we do not know, मतलब हमारे साथ क्या है ना कि हमको नहीं मालूम कि वो सिचुएशन कैसा था. But what I see while reading and knowing about our history and historical events and personalities is it's the cycle of life में जो होता है ना, struggle का part, फिर happiness का part, ये वो.
तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग पीरियड्स पे आते रहते हैं, अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं, ठीक है। अभी जो हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, उस समय जो बोल रहे हो कि नहीं सबका एक कॉमन पॉइंट था कि आजादी लेनी है, मैं बोले मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि सबका शायद पॉइंट नहीं था आजादी लेना। कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सर्व कर रहे थे, तो क्या उनको आजादी नहीं चाहिए थी? देयर वेर इंडियंस इन ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स, देयर वेर इंडियंस यूजिंग ब्रिटिश बुलेट्स एंड दे वेर किलिंग। जब गोली चलाने का आदेश होता था तो बिकॉज इट वाज सो मिलिटराइज्ड और इतना डिसिप्लिन दे दिया था, तो आज भी मिलिट्री में हमारा चलता है। उनको क्या बोलते हैं ना, वो कौन सी मूवी में था अब तक 56 में, अपने को क्या भेजा नहीं है, भेजा अपने को सिर्फ उंगली है, ऑर्डर मिलता है और मतलब उंगली चलाने का है, यू कैन नॉट क्वेश्चन योर कमांडिंग ऑफिसर्स। तो ये जो एक प्रेसिडेंस है ना, वो बहुत ब्रिटिश एरा से मतलब कैरी फॉरवर्ड है। तो मैं इसको मतलब डिफरेंट अभी भी आज के एरा में देख लो, आई मीन पुटिंग द सेम पर्सपेक्टिव इन करंट सिनेरियोस, आज शायद हम किसी के गुलाम नहीं है, बट एक गुलाम वाला जोक हम अभी भी मारते हैं ना, कि अगर योर मंथली सैलरी इज द सब्सक्रिप्शन, योर सब्सक्रिप्शन दैट योर कंपनी पेज टू, राइट? कंपनी के तो गुलाम है ना हम। अगेन एग्रीइंग टू वन फैक्ट कि हमारी एक गुलामी की मेंटेलिटी रह आ चुकी है, ठीक है। और ये पता नहीं मतलब वी गेट द सेंस ऑफ वैलिडेशन इफ इट कम्स थ्रू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। हल्दी दूध यहाँ कोई नहीं देख रहा था कि हाँ हाउ मतलब कितना अच्छा एंटीबायोटिक है और कितना बुखार में और जख्म होने पे हमें, बट यूएसए में टर्मरिक लाटे बोल के अगर मिलने लगा ना, बेसिकली टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलूं तो हमें हिस्ट्री इसीलिए समझनी चाहिए बिकॉज उससे पैटर्न स्टडी होता है। हम साइंस में भी जब स्टडी करते हैं तो क्या होता है, वो एक पैटर्न होता है ना, हम स्पेसिमेन को विथ डिफरेंट टाइम और डिफरेंट टेम्परेचर ऐसे कुछ करते हैं, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन, एक इन्फ्रेंस आता है हमारा कि नहीं भाई ऐसे वैल्यू करने से ये चीज होता है। Hence, this is very much true for social science. Hence, the term is social science. ये भी एक सोसाइटी का एक्सपेरिमेंट है. It is not happening in the at the molecular and atomic level, but it is happening with the at the humanitarian aspects. Different varieties हमें behavior देखने को मिलता है. तो हिस्ट्री के पॉइंट्स है ना, हिस्ट्री हमें इसलिए भी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए, हमें पता होना चाहिए बिकॉज उससे एक पैटर्न स्टडी हो सकता है। Yeah. I think बहुत सही बात बोली आपने about the pattern study because it helps you to understand. I think Mark Twain or somebody had said that history might not repeat itself, but it surely rhymes. So I mean, I still don't know the exact meaning of what that might mean, but I really believe that the pattern study really helps you to get a lot more clarity and context about where you were, where you are, and where you might be. You know, I would like to ask you guys, आप लोग का favorite character कौन सा है film में, and क्यों? Like in the sense of the way that character was portrayed, written, and the where it was at the beginning and where they ended at, मतलब उनका जो पूरा था। अतुल कुलकर्णी बहुत ही रिलेटेबल लगा था मुझे, एंड पूरी मूवी में वो एक कैरेक्टर है ना जो स्टार्टिंग में किसी और पाले में था, दूसरे टीम में था, एंड ही करेक्ट्स एंड रिकरेक्ट्स हिज कोर्स, ठीक है, उसने अपनी गलतियां सुधारी या जो भी, एंड विच इज वेरी मच नेचुरल इन लाइफ ऑल्सो। हम क्या होता है ना कि हमें भी ना अपना एक ईगो मसाज मिलता रहता है, हम बहुत बार बोलते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, जिसको एडजस्ट करना है कर ले, बट एक्चुअली में एडजस्ट करना इज द पॉइंट, एडजस्ट करना ही होता है। और अपनी गलती से सुधारने में, इसमें बताऊं कोई बहादुरी नहीं है कि हार्ड लाइनर बन के टिके रहना, कोई इसमें बहुत ही कोई वाहवाही नहीं है, मतलब मैं तो पर्सनली नहीं देखता हूं तो कहीं भी। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, उस मूवी में भी यही समझाया गया है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना होता है। तो एक्चुअली में किसी ने अपने आप को परफेक्ट बनाया उस मूवी में, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सिनेमा टू द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिनेमा, वो अतुल कुलकर्णी था। तो इसीलिए बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर था। और मुझे लगता है कि वही बात है कि परफेक्शन नहीं होता, इम्प्रोवाइजेशन होता है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल लाइफ, इट इज एप्लीकेबल टू रिलेशनशिप वी मेंटेन एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम परफेक्ट रिलेशनशिप की कामना नहीं कर सकते, बट हम अपनी गलतियों से सीख के सुधार सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं टू ईच एंड एवरी पॉइंट एंड ईच एंड एवरी इवेंट्स, और वो अतुल कुलकर्णी के कैरेक्टर ने किया बहुत बेहतरीन तरीके से। I personally like the character of I just searching the name, I didn't know the name of the actor, Siddharth is the name, जिसने भगत सिंह का काउंटर प्ले किया था। I liked his character actually, like
he was that friend. No, like I liked the in bits and pieces. If you see, जब ये सो अली खान का और इसका when he proposes, he is that guy who goes and hugs them. Yeah, So he is a friend, but he is not like वो ऐसा दिखाता नहीं है बहुत ऐसा, but he is there for everyone in the movie. उसका कैरेक्टर जर्नी भी काफी अच्छा लगा मुझे कि he had to kill his father. वो I really liked the character. It was written very well, and I think actor also very well fitted that in that character. So I personally liked his character. definitely. I mean, same. मेरे लिए भी it's the same character. The guy who never spoke the way he did, like the way he spoke at the end, for example. यार कितना honest space से आया था पहली बात तो. The relationship he shared with his father, and just there's so many things in that character, and there were so many moments you mentioned about वो सोहा अली खान उस time पे भी that song जब उनको hug करता है, I can see on his face, but he's also happy for them. Like he is happy, he knows his heart is going to get broken, but he is happy. Like this, that कितना specific emotion है वो, और उसने कितना बढ़िया से portray किया वो चीज. एंड आगे जाके भी जब वो लोग रेस लगा रहे होते हैं तो ही इज द ओनली वन जस्ट वॉकिंग एंड स्मोकिंग. मतलब जब वो लोग फूल वो जो पत्ते बरसा रहे हैं उस पे सिटिंग साइड में स्माइलिंग, लाइक ही इज मेंटेनिंग हिज सेंस ऑफ डिग्निटी, but is also genuinely happy for them. It's such a, and even after when he unfortunately dies, our mother's character, उसके बाद में भी the way he stands with them, especially with Soha Ali Khan also, like just it's a very good representation of friendship and just giving the person the space and knowing when to stop, like like just when to, when you have to stop. I think all of those things really work very well with that character. And also, fun fact, that character was initially given to Shahid Kapoor and he rejected the role. Like that's another story. कैरेक्टर अतुल कुलकर्णी, हैंड्स डाउन मेरा, जितना मैंने आमिर खान का फिल्मोग्राफी देखा है, हैंड्स डाउन मेरा फेवरेट कैरेक्टर आर्क है अतुल कुलकर्णी का. क्योंकि जैसे वो शुरू होता है, जैसा शोम भाई ने बोला कि वो एक पार्टी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आइडियोलॉजी से वो दूसरा आइडियोलॉजी में जाता है, ठीक. और वो जो चेंज दिखाया है, वो ऐसा भी नहीं कि एक बार धूम से, नहीं, धीरे 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 धीरे. और वो इतना वेल रिटन कैरेक्टर है कि उसको समझाते रहते हैं एडजस्ट कर ले. वो पहले खाना खाते रहता है, वो बोलता है एडजस्ट कर ले, उधर उठ के चले जाता है, ठीक. और जब वो पहली बार उससे मिलने जाता है, तो मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, जो आइडियोलॉजी में अपना उलझा हुआ है, लेकिन उसको खुद को नहीं दिख रहा है कि वहां कितने उलझे हुए लोग हैं, ठीक है. कि जब वो आता है, जब वो बोलता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसके चेहरे में ही दिखता है कि मतलब वो सिर्फ उसके लिए फॉलो नहीं करता कि ये पार्टी का आइडियोलॉजी है, इससे पैसे मिलेंगे, नहीं, वो हार्ट से मानता है कि हाँ, मेरा देश सबसे महान था, मेरा देश सबसे महान है. Because you mentioned about that song, we can talk about the characters थोड़ा और भी, लेकिन यार इस फिल्म में म्यूजिक का क्या रेलेवेंस है आपके हिसाब से? मतलब हिंदी फिल्म में जरूरी रहता है, बट यार क्यों? मतलब can see everybody's, and I think you can wrap up the question here also. सबके चेहरे पे दिख गया मेरे को आंसर, but still, like I think every song has its own personality. Like every song has its own personality, from Masti Ki Pathshala to Khalbali, like those, and the Rang De Basanti title song, like this, मतलब then whether रूबरू रोशनी आता है, and then there is वो जो slow songs भी है उसमें, there is लुका छुपी, yes, right, just मतलब the range of songs, like every emotion is being covered. So I think songs and music in general tends to be the thing that articulates our emotions, which the words are failing to like give justice to. And every time you need to exaggerate feelings, तब at least Hindi movies में गाना आ जाता है, whether it's love, whether it's anything else. जैसे exaggerate करना होता है कि भाई now this is beyond words, मैं बोल सकता हूँ दिल टूटा, लेकिन नहीं, ये बचाओ पहले, ठीक है, this is what will show don't tell वाला situation. And I think like classical music में भी जैसे राग होते हैं बहुत टाइप के, तो हर राग में every सुर of those 7 सुर नहीं होते, स्वर नहीं होते, ठीक है, कोई ना कोई सर मिसिंग होता है या कोई अलग होता है. एंड दैट इज वाई वो भी आता है कि राग का भाव होता है, and which is so beautifully explored in such songs. You realize how powerful music is, because
हर राग का अलग भाव होता है, तो आप ऐसे इमोशन के लिए ऐसा ही राग यूज करोगे, यू नो. एंड whenever you see making of songs and everything, like we just recently had seen Lal Singh Chadha ke songs ka making, and you just realize so much thought has been put to both lyrics and the sort of music that has been, the melody that has been used, and the focus on musical instruments also. Like protest के time पे जब all hell has broken loose, तभी खून जला बज रहा है पीछे. I mean that placing of that was so accurate, and the fact that music is so magical कि मतलब वो exact emotion का वो राग उठाते हैं and it makes you feel the way that it does. I think like that is something like always stands out with so many movies and so many songs. And Rang De Basanti ka, to, as all of you all mentioned, the range is so much, like from absolutely chilled out songs to such emotional songs. तो बहुत ऐसा लगता है उसकी उसके बिना ऐसा लगता है the movie would have been so incomplete, despite it being such a choppy story and such a nice well knit screenplay, but still like songs के ना I'm like नहीं, it would have not been the same. दो चीजें जो इस फिल्म को बहुत it makes it stand out. One is the music, the range of the spectrum of music that is covered over here, and secondly the way it's shot as well, the editing and the way the camera has been used. वो जो camera थोड़ा हिलता है and that fast movement that happens, like it was done in भाग मिल्खा भाग also, it was done here also. It's a very, ताकि वो disturbance को ज़्यादा तुम दिखा सको. I think it is something that he does a lot. It works very well over here. And the way today is juxtaposed with the past, with the use of song, and the emotion जो overlap हो रहा है, जो वहाँ भी वही feel हो रहा है उनको, यहाँ भी वही feel हो रहा है उनको. तो I think वो जो connection बिठाया ना पहले और आज के youth को लेके, वो भी काफी बढ़िया तरीके से किया गया. Like one person I loved the most in the story was the way the foreigner was being shown. उसका सू को इसी के दिखाया है. I loved that because genuinely एक इंसान जैसे दिखाया, मतलब कोई फालतू का बढ़ा बढ़ू के करके नहीं किया, genuinely दिखाया, and I really liked that. डीजे का ट्रांसफॉर्मेशन exactly था क्या आपके हिसाब से? डीजे ने, if you remember, शुरू में कहा था, like in a way it was said that the reason why he doesn't leave college is because यहाँ पे उसको एक sense of purpose मिलता है, belonging, एक identity मिल जाती है. बाहर he is nothing. He also says in that very crucial important scene, जिसके जस्ट बाद में वो हमें न्यूज़ मिलती है कि वो डेथ हो गई है उसकी, where they are all sitting in the bar and they are discussing. वो बोलता है ये चीज कि हमारे मरने पे तो कुत्ता भी नहीं भौंकेगा गली का. What is that character really like? मतलब because वो उसका एक, I personally feel एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मस्ती करना या फिर एक सेंस ऑफ हेडोनिस्टिक सॉफ्ट हेडोनिज्म की लाइफ जीना. ही इज अवॉइडिंग समथिंग. उसको कुछ है जो वो जिससे वो छुप रहा है, डर रहा है, दूर भाग रहा है, और ये मस्ती कर करके उससे जितना हो सके वो रहने की कोशिश कर रहा है. आपके हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली था क्या? एंड में जाके जब वो वहां बैठा है पेड़ के नीचे मर रहा होता है, उसके दिमाग में आपके साथ क्या चल रहा है थ्रू आउट द जर्नी? व्हाट हैज ही रियली एक्सपीरियंस्ड अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है ना डीजे का जो कैरेक्टर था ना, हम देखते हैं ये बहुत ही आम बात है, हमारे बीच में भी है. इट्स कूल टू बी केयरलेस रहो, उसको कूल बताता है, अरे ज्यादा मत सोचो. सबको पता है कि इंसान लाइफ को कभी ना कभी अपने से सीरियस लेगा. तो डीजे का ना थोड़ा सा वो डिफेंस मैकेनिज्म बोल दो या कोपिंग मैकेनिज्म बोल दो, वो ओवरऑल एक एस्केपिज्म में जी रहा था. उसको लगता था यही जिंदगी है, यही चल रहा है. आई मीन टू अ पॉइंट मेरे को वो डीजे का कैरेक्टर बहुत हद तक तेरे नाम का सलमान जैसा लग रहा था, जो कॉलेज से पास आउट तो हो चुका है बट कॉलेज छूट नहीं रही है इससे, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे भाव इधर ही मिलता है. और उसने वो डायलॉग में बोला भी कि यूनिवर्सिटी के गेट के इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट के उस तरफ लाइफ हमें नचाती है. तो मे बी उसको पता था कि लाइफ उसको नचाएगी उधर, बट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. और वो बहुत कॉमन है, हम लोग भी करते हैं. हम सबका अपना अपना एक एस्केपिज्म पॉइंट होता है. एंड रिमेंबर डीजे एंड पार्टी, they actually predicted Madhavan's death and mocked the death march और वो सब किए थे. लास्ट पार्टी हो रही थी वहां पे, ठीक है. बट देखो वो डीजे ने मजाक में कहा था या जो भी ऐसे एक कैजुअल कन्वर्सेशन में पुट किया था. बट नेक्स्ट ही सीन में आई थिंक उसके जस्ट स्क्रीन प्ले में नेक्स्ट ही पार्ट में इट कम्स आउट कि ऐसे मिग क्रैश हो गया एंड ऑल. आई मीन मुझे लगता है वो उसका एक स्मेल द कॉफी वाला मोमेंट था, वो एकदम वेकअप पॉइंट था कि आई मीन दिस इज लाइफ, दिस इज
आई मीन हम हंसी मजाक कर सकते हैं एंड इट इज ओके टू बी थोड़ा सा फ्री एंड थोड़ा सा ऐसे जैजी हो जाओ, थोड़ा सा लाइफ में केयरलेस हो जाओ, बट लाइफ ब्रिंग्स यू बैक, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है? लाइफ ब्रिंग्स यू बैक एंड मेक्स यू फेस द रियलिटी कि बेटा जो तू भी बोल रहा है ना या जो भी है ना, इट्स गुड एज ए कोपिंग मैकेनिज्म, बट कब कितना भागेगा? एक पॉइंट पे आएगा कि तुमको ये फेस करना पड़ेगा, एंड वो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन था मे बी कि हाँ वी मतलब लास्ट मुलाकात में भी मॉक्ड हिज डेथ एंड द सैल्यूट एंड 21 तोपों की सलामी, एंड इट इज हैपनिंग इन रियल। वो वाला जो सीन था जिसमें एक्चुअली वो लोग मॉक कर रहे थे माधवन की डेथ का, आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हेन आई सॉ इट द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक oh shit, what if it happens? That was my first reaction to it. And the very next time when it did, I was like actual में chills आ गए थे कि what would be the reaction of the person who was actually taking it very like in a funny way at that moment of time, stunned what we made a fun of, and exactly that situation has happened. So how life will now take a turn is not on opinion or your own control. Reality is coming to get you, and you are just left to battle with it. There was that song "Tu bin bataye chale jaye." पता नहीं क्यों मतलब like I was having that feeling that माधवन तो जाने वाला है ये तो होने वाला है, ये मतलब like this character is gonna die. And then when it did happen, it actually created a shock among those friends. भाई life that we are dreaming of and that we think that we have control over is not in our hands. Really well put. Thank you, Risha, for that. I think also the fact that it's very interesting how the director decided to use that song over there. It could have easily been a Khalbali song, because all of them are actually enjoying themselves. But like पूरा scene थोड़ा slow motion में है, थोड़ा एक sense of there's an air of melancholy. कुछ एक sense of वो है कि मतलब some impending doom, कुछ होने वाला है. तू पूरा उसमें बता रहा है, वो कुछ तो लग रहा है कि यार ये तो खुश है सब, तो फिर ऐसे गाने क्यों बता रहे तुम? मतलब ऐसा ये तो थोड़ा गलत साउंड कर रहा है, मतलब यहाँ कैसे ये प्लेस हो गया? I felt like कि वो जो एक होता है ना कि तूफान से आने से पहले की खामोशी Yeah. वाला सॉन्ग था वो. Exactly. Lovely, very well put actually. Question more to do is with a scene from Sardar Udham. अगर आपने फिल्म देखी है, अगर आपको फिल्म का एक सीन है जो मेरा I think has become one of the most defining scenes for me in film, in any films. जब वो लास्ट में वो बोलता है कि मेरे ग्रंथी साहब ने या मेरे टीचर ने बेसिकली मुझे कहा था कि पुत्र जवानी एक तोहफा है, अब ये तुम्हारे पर है कि तुम इसका कोई मतलब निकालो या इस जवानी को जाया कर दो. फिर आगे वो बोलता है कि पूछूंगा उनसे जाके मैं कि मेरी जवानी का कोई मतलब था कि मैंने अपनी जवानी को जाया कर दिया. Do you guys ever think about the meaning of your youth, and do you guys ever think about your purpose in a way that is also to do with you and to do with something larger, something also beyond you? Like, do you think of the fact that about whether you're wasting your youth, or about basically just are you wasting it, or are you does it mean something? The thing is कि मैं भी यही बात कहने भी वाला था, the character DJ का and the meaningless का जो उसके around the character has been designed. So if you have seen Slip of Thesis, तो उसमें चरवाक ask कि every action that we do, the smallest action that we do, it has an impact on the universe, and it can be any simple action, and in a way our existence provided a meaning डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग किस तरीके से वही डिजाइन दो उस एक्शंस को. सो जो डीजे का कैरेक्टर आई फेल्ट कि स्टार्टिंग से लास्ट तक ही वाज काइंड ऑफ ट्राइंग टू एस्केप द रियलिटी ऑफ कहते जो भी है, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, बट हिज कैरेक्टर वाज आल्सो अवेयर कि this part of my life is I have to be available, I have to be fight, I have to do all these things, but he isn't getting that platform. We all try to give our life a meaning, and उस meaning देने के चक्कर में we try to कहते हर चीज से भागने की कोशिश करते हैं. I remember कहते एक और सीन क्राउन का है, उसमें there was कहते जो क्राउन का
प्रिंस रहता है. This prince was talking about a story जिसमें एक कैरेक्टर रहता है who was waiting for his chance for World War III. वहाँ पे उसका बुलावा किसी भी टाइम आने वाला रहता है. And this character knows कि अगर उसका बुलावा आएगा, he can be died in that World War II. But this character does not have a meaning. He does not have a purpose to live with. So he will, अगर उस बंदे के पास मतलब he has a choice कि he will live his normal life and he can continue, but he does not have a purpose. And that war, to go into that war and he will get a chance to fight in World War III, will give a meaning to that person. So choosing death has been providing a meaning to his existence, and he will choose that death कि कब मेरे को वो बुलावा आएगा, कब I'll get a call to go into that war and will fight for my country and will give that meaning to my existence. When this political and existential, it goes side by side. You can be political or you can be existential. You can be both. मतलब the existential crisis comes with a political crisis going in the background. I have felt in every film, किसी भी film का, if you will take Taxi Driver, कोई भी film, there is always a backdrop of political crisis, and that goes into the personal crisis, and then it comes to the existential crisis, that the person can't give a meaning to his life is because of the way the system has been designed. And this person know कि he can live in a world and he can. And I'll again give an example of Virat Kohli का statement. उसने 1 महीने से बैट नहीं छुआ है. He hasn't been playing cricket, and it gave him a new meaning, a new look around. And the whole thing कि as a man you can't be, क्या कहते हैं, man don't cry और ऐसा करके उसके around he has talked beautiful lines कि feeling weak or feeling emotional or feeling low और वैसा करके you kind of feel क्या कहते down, and then you have to impress others, then you have to act. Whole youth of this country or of any country that is representing by कहते हैं जो DJ represent कर रहा है, he represent a political crisis through a personal crisis that's been going in a country, in a postmodern world that hasn't got his chance, and they have been continuously being pushed कि you are not the part of this struggle. Let us handle it. We are the chain makers, or we are the system that is designing it. And for any country to change the country and to give this, I mean, the illusion of that you are doing something and you are making a lot in your life. The concluding point of mine will be कि the political and existential goes hand in hand, and whenever it comes and a character face this cross out, then he chooses to be this DJ, know कि he can't do anything about it, and he goes to live in this dreamy world because it gives him a satisfying experience of having a sense of power that he can't process in a real world, but at least in his dreamy imaginary world that is creating all around will give some sense of control over his life.